Let's start our class. And topic for today will be focus for your for protein identification by Biruet test. Yeah, it's one. And secondly, as you remember, we have a specific rule. You must turn on your camera. I will check attendance by your turning camera. Yes, please. I wait. And also from this class, we will start to walk in or to fix your attendance per every practicum class. It will be obligatory rules. Thank you, Falak. It's 23 group, yes? Yes, absolutely. Yes, sir. Wonderful. Okay. I will show you this table, which will be our useful sources for checking your attendance. And here I will use this table also for fixing your additional marks. For example, for correct answer during the some lecture class, correct. No, usually in lecture class we have no additional questions, but mostly for some practicum classes. Okay. I have no final list of your group methods. I will use it by now. I will use the list who today present in our class. Abid, Hassan, are you here? Yes. Hussein, sorry. Hussein. Abid, Hussein, tell me anything. Are you here? Yes, sir. Wonderful, thank you. Hansla Nasir. Yes, sir. Okay. Wonderful. Okay. Izaz Ahmad. Okay, Izaz Ahmad, thank you for your message. And Muhammad Falak here. Sayed, are you here? Sayed Jawad, are you here? Are you here? Sayed Jawad. For me today you absent. Riaz Khan, are you here? Yes, sir. I am. Okay, thank you.
Yasin, Yes, sir. thank you. Okay, and in January we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 students. It's all you who are group leader of your group. Group leader, are you here? Izaz Ahman. Group leader here or not? Yes, sir. I am the group leader. Azaz, okay. Yes, sir. Azaz, please look through the list in the screen, and if some students not added in this list, I mean who in this list, please send me in the Zoom chat name of these students. I will add it, okay? Yes, sir. I send. Just wait, sir. Yes, please. And also, Sir, there are some students is leave university. officially, it's fixed. I mean, sometimes students decided to live in university, but not officially finalize some official papers that leaves it from university. Do you know? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can edit all students, and we will mark some Sir, column. sir, it will be better. Sir, it will be better that it should be confirmed from the university. Repeat, please. Okay. What I want to repeat again. The topic for today topic will be connect with the Biruet reaction, because Biruet reaction is a specific test for example, identificate for analyzed in solution absent or present proteins. Yeah, in solution absent or present proteins. Okay. Excuse me, sir. Tell me. Sir, there is sir, the first one row have one number and all of zero. Can, What does it mean? sorry, can you send question in the chat, because I cannot hear it's very or repeat your question. Okay. Okay, sir. Sir, I wanted to tell that in the first arrow before the Sayyid Jawad name, there is a mark, the one. What does the one mean, that he hasn't attended one's class, or what? Well, you mean about Cooper or about what? Plus one. Yeah, sir. There you have written the, there you have written the one before the Sayyid Jawad name. What does it mean that Sayyid Jawad hasn't attended the class, so the one class, or what does it mean? Plus 2 at plan 5, it will be connected with the charging. If we're talking about electricity charging, it will be connect with the negative charging, 2 electrons. It means I will show you example. Just a second. If I understood you correct, you answer about sometimes we use
for example, specific marking. What's this? For example, when we're talking about copper, today we will be talking about copper, it will be plus, or it can be copper plus 2. You mean this one? Yes? You ask about this or not? Tell me, please, it's question about what means this one, or What is the question? it's question, it's about, I just ask you, you ask me about this question, yes, or what? This. Okay, if your question will be connect with this, what means this one, it will be electricity charge. If, for example, if you remember, we can talk about atoms. In the atom, we have some positron. It's a positively charged compound, yeah? Positively charged, for example, 3. And we have around atom, we have in specific orbits, we have electrons, and electrons will be negatively charged. If we're talking about neutralized situation, we will see in the same, for example, 3 electrons. Electrons will be plus 3 protons. It will be infinitely, charging will be 0. If you're talking about this plus, it means this atom will have lose some electrons. For example, it will be 5. For example, it's not correct, but for example, it will be 5 protons inside. It's plus, and only 2 electrons around. One electron and 2 electrons. And infinitely, we will talk about this. Infinitely, we will talk about this compound like a chemical reagent, some chemical reagent. Okay. Plus 2 for and 4 and 2 these electrons was lost. And if 2 give possibility chance to charging of this molecule plus 2. Okay, we lose connection, and we lose also, for example, host for Zoom. Send now.
Okay, I now inform. Да. Ну, у меня занятие, но мне почему-то выкинули. Мне кажется, больше касается какие-то, может, законодательные документы, материальная база, где описывается обеспечить безопасность для сотрудников, студентов, пациентов, включающих обеспечение, там, короче. Это у нас есть, потому что у нас есть техника безопасности. Она нужно его расписать. На чем основывается, там, есть какие-то там нормативы или что. Ну, давайте пока общий напишем, потому что есть у нас, я, знаете, когда готовил по лаборатории информацию, у нас в учебных заведениях в стандарте, не стандарте, а вот правовых документах по организации учебной деятельности есть безопасность лаборатории и так далее, и могут это прописать. Я вытащу это. Я запомню, значит, 6.1.2 получается. 6.1.2. Да. Сейчас я чуть запомню. Тогда после занятия, да, в течение часа. Да, там у нас должна быть оборудование с пропагированием, но у нас нет. Ну, вот этого оборудования. Давайте я напишу карту, а потом, если что-то выйдет, обеспечить безопасность для сотрудников, студентов. 6.1.2. Я найду, видишь, есть. Все, хорошо, сейчас я сделаю. Вот у меня он перезагрузился, я пишу сейчас, чтобы мне дали функцию. Нет, а у меня получается, они меня не слышат, я их не слышу. Ну, странно. Ну, вы же все включили, да? Да, у меня там все включено, почему-то. Okay, we have a possibility to continue our work, and for this reason, let's see some presentation, some points. Okay, when we're talking about Biruet reaction of two proteins, it's the first we must focus for some specific reaction. Just a second, because this specific reaction focused for recognized specific linkages in between, for example, specific linkages between peptide bonds and
peptide bonds and copper, because copper give us possibility to make complex with the peptidic bonds. What's mean peptidic bonds? I think you remember, because in the previous lecture class we was talking about amino acids and how amino acids will make some linkages between chemical compound. Yeah. Okay, and as you remember, after the reaction will be produced specific peptidic bonds, and these peptidic bonds are you hearing me? Are you hearing me? Yes, sir. Wonderful. Yes, sir. Because some problem we have some technical problem. Okay, and if you're talking Sir, about, your voice is not clear to me. sorry, repeat please. Sir, your voice is not clear. Actually, we couldn't understand. Falak, it's all of you not hear me or just you? Sir, it's me. I think so. The remaining member. You can. Because Yes, sir. I hear you. your voice a little bit how it blinked, or how I mean not understandable. Yeah. Okay. Let's try to finalize. Maybe I will turn now video. And maybe it will be more understandable. Okay, we will try. Okay. If we're talking about this reaction, it will be mostly based in the, for example, specific alkali environment. Yeah, alkali environment. It's very important because alkali, some ions, metallic ions, will create linkages. Will create linkages
मंजिला आवाज आ रही है सर की? हेलो हेलो मंजिला जवाद विकास आवाज आ रही है सर की या नहीं? Students, hear me? आ रही है, आ रही है. Is it good or not? Is it good voice or not? Are you hear me good or not? Okay, tell me please. Are you hear me? Yes, it's if talk about Falak, I also voice and coming stopping. Okay, let's try. I try to show you some video. Maybe it will be more understandable. Let's try to do it. Aim: to detect the presence of proteins by Biruet test. 1. Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg, in a test tube. Step 2. Add 1 ml of 40% NaOH solution. Step 3. Add 2 drops of 1% CuSO4 solution. Step 4. A violet color indicates the presence of proteins. Is it understandable or not? This video, I mean, how you hear some voices from in video. Let's see this one, for example. Egg white contains a lot of protein. The test for protein is called the Biruet test. This involves adding some sodium hydroxide solution, then running some very dilute copper sulfate solution down the side of the tube. At the top of the mixture, the colour change to mauve shows that protein is present. So which of these will test positive for protein? Bread in tube 1, nuts in 2, and grape juice in 3.
Both the bread and nuts contain protein. Which contains more? Experiment 106. The Biruet test for proteins. The Biruet test is an analytical procedure to identify soluble proteins in solutions. To perform this test, we need a protein solution, sodium hydroxide 10%, and a diluted solution of copper sulfate. Watch how a 10% solution of sodium hydroxide can be prepared. As this base is conditioned as pellets, it's very difficult to weigh a fixed amount due to the pellet's lack of uniformity. After a certain mass is weighed, add distilled water until you reach 10 times the mass of the weighed base. So, you get a 10% solution of natrium hydroxide. Handle carefully the sodium hydroxide as it is very caustic. When preparing the copper sulfate solution, take in account its crystal water content. Weighed 0.78 grams of copper sulfate pentahydrate to have 0.5 gram of salt dissolved in 50 gram of solution. Separate in 2 beakers an egg yolk of its white. Dilute both with water to make protein solutions. Stir them to ensure homogenization. Filter both mixtures. You may envisage the preparation of a protein solution from bread. Another soluble protein you might analyze is a solution of gelatin.
Milk is also suitable for the Biruet test as it contains casein, a water-soluble protein. To test the presence of a protein, take in a test tube 3 ml of a sample solution. Add the same amount of the 10% sodium hydroxide solution. Add a few drops of the 1% copper sulfate solution. Shake it to homogenize the mixture. If a violet color is seen, this is an indication that the analyzed solution contains a soluble protein. Repeat the procedure with egg yolk solution. The violet color is seen even if the sample is yellow. Milk also gives a positive reaction for the Biruet test. Gelatine is also obviously reacting as a color change is observed. The violet color is due of a square planar copper complex with the amino groups involved in the peptide bonds, the complex being called Biruet. As the solutions contain copper, it is advisable to discard them in container used to collect less toxic inorganic waste. Okay, I think. Is it understandable? Is it possible to hear? Tell me anything. Are you hear me or are you
can hear voices in video. Anybody hear me? Yes, sir, my voice is clear. Yeah, yes, good. And some more video, maybe? Sir, I have. Yes, sir. Repeat, please. Okay, wait a little bit. Sir, I have a question. May I ask? Hello. Sir, I have a question. Can I ask? No, sir. Let's try to see this video. It will be in Hindi. Maybe it will be more understandable for you. Yes, let's try. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विद डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टेस्ट है, दैट इज बायूरेट टेस्ट उसको हम बोलते हैं। और ये टेस्ट हम करते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के डिटेक्शन के लिए। प्रोटीन और पेप्टाइड कहने का मतलब कि जहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा उसके लिए हम बायूरेट टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन कुछ नहीं है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबा सा चेन बनाते हैं, जिसमें जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? तो ये हमारा एक अमीनो एसिड है, जिस अमीनो एसिड्स में हमारा एक COH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। तो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाने के लिए एक अमीनो एसिड्स का करता है, बॉन्ड बनाता है दूसरे अमीनो एसिड्स के NH2 ग्रुप के साथ विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, सो इट इज ए डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, यू कैन कॉल इट। और दोनों जुड़ जाते हैं तो कंडेंसेशन, सो इट इज ए काइंड ऑफ कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज ए पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। सो दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ वन अमीनो एसिड एंड दिस इज पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। सो दोनों अमीनो एसिड जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब बायूरेट टेस्ट होता क्या है? इस बायूरेट टेस्ट का अल्टरनेट नेम, एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोवस्की टेस्ट। ये टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ तभी ये टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन देता है, अदरवाइज ये टेस्ट नेगेटिव देता है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं दो तरह से, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए भी और क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए। क्वालिटेटिव टेस्ट मीन्स जस्ट टू पता लगाने के लिए कि प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और नहीं है। और क्वांटिटेटिव जहां हम मेजर करते हैं एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, फिक्स प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो इसकी जो लीनियरिटी है इस टेस्ट की वो होती है 5 से लेकर के 150 mg/ml तक की हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट कोई भी सिंगल अमीनो एसिड्स नॉर्मली नहीं देता है, सो इट इज नॉट गिवन बाय एनी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अलोन। जब दो अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तभी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं देते हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड्स है जो वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जो है हिस्टिडीन। सो हिस्टिडीन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच गिव्स यू पॉजिटिव बायूरेट टेस्ट। अब बायूरेट क्या होता है? नॉर्मली ये हमारा एक यूरिया कंपाउंड, अगर नाम से आप देखेंगे तो नाम से सजेस्ट होता है इसे बाय मींस दो, यूरिएट मींस यूरिया, यूरिएट कम्स फ्रॉम द यूरिया। तो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया
इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। दो यूरिया मॉलिक्यूल्स को जब हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो दोनों कंडेंस जुड़ जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया। यहाँ से H और NH2 निकल जाते हैं तो एक बनता है NH2CONH2 ये मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं बायूरेट। स्ट्रक्चर ऑफ बायूरेट का अगर आप देखेंगे तो हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड देखा था जहाँ CONH2 का पेप्टाइड बॉन्ड था, तो ये स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। इसीलिए बायूरेट का बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो पेप्टाइड्स की तरह ही रिएक्शंस होते हैं। ये हमारा पेप्टाइड्स है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पोर्शंस और ये पोर्शन ऑफ बायूरेट इज एग्जैक्टली सेम। जहां भी CO और NH के बीच का बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो सिमिलरली ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है बायूरेट के। तो बहुत सारे रिएक्शंस बायूरेट जो देते हैं वो हमारे पेप्टाइड्स वाले रिएक्शंस ही होते हैं। बायूरेट टेस्ट के लिए जो हमारी जरूरत होती है, हमें जो चाहिए होता है, सबसे पहले हमें एक टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो टेस्ट सॉल्यूशन प्रोटीन्स का होगा। लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में नॉर्मली जो प्रोटीन सॉल्यूशन हम बनाते हैं टेस्ट के लिए वो होता है बोवाइन सीरम एल्बुमिन, जिसको हम बोलते हैं BSA। तो BSA का सॉल्यूशन एक चाहिए हमें। फिर चाहिए हमें बायूरेट रिएजेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें होता है कॉपर +2 सल्फेट, ये नॉर्मली पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में होता है, 5H2 इसके साथ होते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, इसको हम कॉमन फॉर्म में एलएम भी बोलते हैं या फिर रॉकेट सॉल्ट भी बोलते हैं। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली होता है। चौथा पोटेशियम आयोडाइड। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायूरेट रिएजेंट के। हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या कितनी कंपोजिशन क्या होती है। फिर हमें चाहिए डिस्टिल वाटर बाथ की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है। अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं 37 डिग्री के लिए, अदरवाइज नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ड्राई टेस्ट ट्यूब और पाइपेट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे बायूरेट रिएजेंट बनाते क्या हैं। तो रिएजेंट का कंपोजिशन क्या क्या है। तो हमें कॉपर सल्फेट चाहिए जो पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है 1.5 ग्राम। देन हमें चाहिए रॉकेल साल्ट पोटेशियम सोडियम टार्टरेट 6 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड 1 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए 300 ml। एंड फाइनल वॉल्यूम हम करेंगे वाटर के साथ जो 1 लीटर का होगा। सो ये सारे कंपोजिशन जो है वो 1 लीटर के लिए है। अब इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने यूज किया, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम टाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस चारों के अपनी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट में भी कॉपर +2 आयन जो नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड में भी स्पेशली नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड बनाता है कॉपर के साथ। दूसरा NaOH जो होता है वो रिएक्शंस की कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को, सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाता है, बिकॉज रिएक्शन जो होगा वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही होगा। तो NaOH का काम है अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। रॉकेल साल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है वो चिलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे और भी टेस्ट में हमने देखा है, जहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट में हमने देखा है, फेलिंग टेस्ट में देखा है, जहाँ चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट जैसे यूज करता है और ये स्टेबलाइज करता है कॉपर +2 आयन को। चौथा पोटेशियम आयोडाइड जो ऑप्शनल सम कंपोनेंट्स है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास लैब में नहीं है तो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसका काम होता है ये कॉपर के रिडक्शन को इनहिबिट करता है। रिडक्शन मीन्स कॉपर +2 से कॉपर +1 बनने को रोकता है। तो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड नहीं यूज करते हैं तो ये इजिली कन्वर्ट होंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो रिडक्शन को स्टॉप करेगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, चारों कंपोनेंट जो हम बायूरेट रिएजेंट में यूज करते हैं। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। तो नॉर्मली बायूरेट रिएजेंट में हम जो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे यूज होता है, बेस जैसे यूज होता है। ये कॉपर प्लस सल्फेट मीन्स कॉपर +2 रिएक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड में भी नाइट्रोजन के साथ इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, एक कंपाउंड बनाता है वायलेट कलर का जिसको हम बोलते हैं बायूरेट कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू होता है। अगर आपके पास आपके टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोटीन्स पेप्टाइड्स बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो ब्लू कलर से कन्वर्ट हो जाएंगे वायलेट कलर में बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बायूरेट कॉम्प्लेक्स। अगर पेप्टाइड बॉन्ड एब्सेंट है तो रिएक्शन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा वायलेट कलर में। कलर की इंटेंसिटी जो होती है इस वायलेट कलर की वो डिपेंड करता है कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे तो कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कलर कम होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स कम होंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
So intensity is directly proportional to the number of peptide bonds present in the solutions. NaOH के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ये एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करता है। चार नाइट्रोजन चाहिए होता है, 4 अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कॉपर +2 के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। हम देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं ये चारों रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायूरेट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये यूरिया है। जब हम यूरिया को गर्म करते हैं 180 डिग्री पे, तो ये हमें अमोनिया को निकाल करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बायूरेट। ये बायूरेट, 4 मॉलिक्यूल ऑफ बायूरेट का ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर होता है वो रिएक्ट करता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ कॉपर। So this is one biurate, this is another biurate, this is third biurate and this is fourth biurate. So हर एक biurate का ये जो नाइट्रोजन है ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है जिसका कलर होता है वायलेट। तो कॉपर +2 जो ब्लू कलर का था वो उसका कलर हो जाता है वायलेट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिमिलर रिएक्शंस, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस जो होता है वो पेप्टाइड्स भी देता है। ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये डाइपेप्टाइड है जिसमें 2 अमीनो एसिड हमने ज्वाइन किया हुआ है। बट नॉर्मली आप एन हमने लिखा हुआ समझ कि ये चेन लंबा है। तो जब पेप्टाइड्स रिएक्ट करते हैं ब्लू कलर के कॉपर +2 आयन से इन अल्कलाइन कंडीशंस, तो पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर के कारण ये नाइट्रोजन इस कॉपर के साथ +2 के साथ पेप्टाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है डीप पर्पल और वायलेट। अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वायलेट कलर मिलेगा। अगर ये पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा और वायलेट कलर नहीं बनेगा। तो कलर वायलेट कलर बनने से हमें पता चलता है कि पेप्टाइड्स हैं या नहीं है। रिएक्शन करेंगे कैसे, तरीका क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब साफ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। एक में हम टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे, दूसरे में हम कंट्रोल डालेंगे, एग एल्बुमिन डालेंगे, एग एल्बुमिन कहने का मतलब कि प्रोटीन डालेंगे। तीसरे में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे। सभी में हमने 1 से 2 ml ये सब रिएजेंट डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, आइदर टेस्ट सॉल्यूशन का या एग एल्बुमिन का या वाटर का। सभी टेस्ट में हम 1 से 2 ml बायूरेट रिएजेंट डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम आइदर वाटर बाथ में 37 पे डालेंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे डालेंगे और उसके बाद हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे, कलर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो दिस इज द नॉर्मल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर +2। ये ब्लू कलर कॉपर +2 आयन का होता है। अगर पेप्टाइड प्रेजेंट था इन द टेस्ट सॉल्यूशन तो वो कलर चेंज होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसके कारण ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन हमें दिखेगा। अगर ये कलर कन्वर्ट होता है इट मींस पेप्टाइड बॉन्ड वाज प्रेजेंट देयर। अगर ये नहीं कन्वर्ट होता है, ये कलर रिटेन होता है, इट मींस पेप्टाइड वाज एब्सेंट देयर। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ चीजें हमें याद करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एडवांटेज जो इस मेथड का है कि इसकी टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत कम होती है, रिएक्शन फास्ट होता है, 5 मिनट में आपको पॉजिटिव पता चल जाएगा। इसके बाद डिसएडवांटेज जो इस टेस्ट की है वो है इसकी लो सेंसिटिविटी, और अगर आपके रिएजेंट में अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है किसी तरह से एज ए इम्प्योरिटी, इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट, इट विल इंटरफियर विद द कलर फॉर्मेशन। तो वो आपको एक ड्रॉबैक है। तीसरा, मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है रिएक्शंस के लिए। एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, जो आपने यहाँ देखा है कि मिनिमम हमको 1 पेप्टाइड चाहिए जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही पेप्टाइड बॉन्ड वाला डाइपेप्टाइड कंपोनेंट्स हैं तो वहाँ रिएक्शंस नेगेटिव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपने अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। Okay, I think in this moment we will finish. And in the next practicum class, I think internet will be a little bit better and we can see and we can talk about some additional points. Maybe some questions will be available for you in the next practicum class. Okay? Yes, sir. Yeah, it is understand. Okay. Okay. Have a nice day then, and good luck. Bye bye.
Sir, uh, how we marks in our practice class? How we what? Answer your question? Yes, sir. Tell me. Repeat, please, question. Repeat, please, question. Sir, how we marks in our practice class? Marks. Marks? Yes, sir. First marks Yes, sir. in practice class. If you ask about marks, Sir, I will. yes, sir. I Sir, will make some little short task for you during per every classes, and will calculate this result for your final marks. Sir, this is our practice class. Repeat, please.